Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a block of mass 4 kg is attached to a spring of force constant 24 Newton per meter. To start with, the spring is unstretched and block is at rest on a frictionless horizontal surface. When a constant horizontal force of 10 Newton is applied on the block to move the block through a distance of 0.5 meter, what is the speed of the block? So first of all, we need to understand about the concept of spring force. So we know कि जब भी स्प्रिंग के ऊपर इफ वी स्ट्रेच दिस ब्लॉक इन दिस डायरेक्शन, सो स्प्रिंग के ऊपर एक फोर्स लगेगा एंड दैट इज गिवन बाय F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, वेर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट वी कैन से. ऑल्सो वी नो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जो होता है, दैट एक्सप्रेशन वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट. सो दिस इज द वर्क दैट इज बीन डन बाय द स्प्रिंग, ठीक है, to restore itself. अब also we need to understand about work energy theorem that we know, that is W net is change in kinetic energy. W net is work done by all the forces, that is conservative non conservative. अब यहाँ पे non conservative forces is a friction force जो कि path पे उसका work done depend करता है. So यहाँ पे तो surface smooth बोला गया तो friction is absent, so just the force acting will be the spring force which is conservative in nature, जो कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है जस्ट, एंड नॉट ऑन द पाथ, ठीक है. ऑल्सो वी कैन से के वर्क डन को जो लिखने का तरीका होता है, वी कैन राइट दिस हैज टू बी एफ एस कॉस थीटा, राइट. अब यहाँ से वी कैन सी के थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट वेदर द वर्क इज टेकन टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव. If displacement and force are acting in the opposite direction, so work done comes out to be negative, and if they are acting in the same direction, so we take the work done as to be positive, right. So अब इस situation को अब we can try to analyze. अब यहाँ पे we can say if we apply work energy theorem, so we can say this will be the case. अब initially it was at rest, so kinetic final minus of kinetic energy initial इसको हम zero कर देंगे. एंड अब जो वर्क डन है, वर्क डन दो तरीके से आ रहा है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स एंड नॉर्मली जो वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है 10 न्यूटन का, दिस इज, ठीक है. सो अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल वाइल यूजिंग द कन्वेंशन, दैट इज अब स्प्रिंग फोर्स की अगर हम बात करें, सो इट इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, हम देख सकते हैं, एंड डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स राइट एंड फोर्स इज टुवर्ड्स लेफ्ट. सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस ऑफ हाफ kx square, that is we have already derived its expression, that is work done by spring force at half kx square, right. Since it is a variable force, so expression ये आता है, and that result we have to keep in mind, that is half kx square and plus of यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जो है 10 न्यूटन का, इसमें हम देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट भी ब्लॉक का सेम डायरेक्शन में, एंड वी कैन सी के फोर्स भी सेम डायरेक्शन में, सो वी आर टेकिंग दिस वर्क एज टू बी पॉजिटिव एंड इट इज F that is 10, या फिर हम जस्ट लिख देते हैं F इंटू द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि x ही मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक. अब यहाँ से वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ओवर हियर. सो F हमारे पास गिवन है 10, x भी हमें गिवन है 5, सो 0.5, सो ये हो जाएगा 5 माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर, के हमें गिवन है 24, सो 2 हाफ इंटू 24, दैट इज 12 इंटू 0.25, 0.25 हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू मास इज बीन गिवन एज 4 kg एंड v स्क्वायर. v हमें फाइंड करना है, इफ यू कंसीडर द फाइनल वेलोसिटी एज टू बी v, ठीक है. सो फ्रॉम दिस सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं कि दिस कैन बी रिटन एज 5 माइनस ऑफ 12 इंटू 0.25 विल बी नथिंग बट, इसको हम 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं, सो 3 5 minus 2 will be 5 minus 3 will be 2, and that is equals to 2v square. So v की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड. So this is the answer to the question. So इस स्पीड से ब्लॉक will be moving on the surface. So I hope you understood the solution. All the best.